Thank you. નમસ્કાર. કેમ છો? મજામાં હો તો જોરથી સંભળાવો જોઈએ વાત. કેમ છો? બસ આ તમારા ચહેરા પર જે સ્માઇલ છે એ સ્માઇલ અકબંધ રહેવું જોઈએ આવનારી 40-45 મિનિટ સુધી. અને તમને ભારતીય સિનેમાનું વર્તમાન અને ભવિષ્ય એ કેટલો આશાસ્પદ, કેટલો ઉજળો છે એનું દર્શન થાય, તમને દર્પણ દેખાય એ માટેનો પ્રયત્ન રહેશે. We have with us Anand Pandit ji. Anand ji, once again, welcome to Pandit and Dhvanit. Thank you. How many of you know that he has an Ahmedabad connection? Not many are aware about your Ahmedabad connection. So let's talk about your roots first. How are you an Ahmedabadi? Or what is that Ahmedabadiness? Ahmedabadi પણું તમારામાં કયું છે? Could you just throw some light upon your Ahmedabad connection? So, thank you for inviting me to this wonderful conclave. And I thank you for letting me sit next to Dhvanit. હું અમદાવાદનો છું એમ નહીં કહું, પણ શુદ્ધ અમદાવાદી છું. ઓર મુંબઈમાં જેમ કહે ને કે શુદ્ધ અમદાવાદી નહીં પણ પાકો અમદાવાદી છું. અને એનો મને ગર્વ છે અમદાવાદી હોવાનો. And we are proud that you made Ahmedabad proud. So, about your roots, પાક્કા અમદાવાદી આપ કેવી રીતે છો? કઈ શાળામાં અભ્યાસ કર્યો? મેં સીએન વિદ્યાર્થીમાં અભ્યાસ કર્યો હતો. મેં પણ સીએનમાં અભ્યાસ કર્યો છે. I'm so thin. That's right. The question. આજે મારો ઉત્સાહ થનગનાટ છે એટલા માટે જ હતો. એ પછી એલડી એન્જિનિયરિંગમાં એન્જિનિયરિંગ કર્યું, ઇલેક્ટ્રોનિક કમ્યુનિકેશન એન્જિનિયરિંગ. અને ત્યારે કોલેજ કાળ, સ્કૂલ કાળ એ દરમિયાન હંમેશા બચ્ચન સાહેબની એક ફિલ્મ જોઈ હતી, ત્રિશુલ. લગભગ 100 વખત જોઈ હશે અને પૈસા ખર્ચીને જોઈ હશે. એટલે એવું નહીં કે પેલી કેસેટ જોઈ જાય. અને ત્યારે એની અંદર એક કેરેક્ટર હતું એમનું, જેમાં એ શાંતિ કન્સ્ટ્રક્શન કંપનીના માલિક છે. Exactly. Those who have watched the film would know that in the goggles you could see the multi-story building. Beautiful scene. So ત્યાંથી એક દિમાગમાં જે કહેવાય ને કીડો હતો કે મુંબઈ જેવું છે, કન્સ્ટ્રક્શનની આપણી કંપનીઓ જોઈએ, ઇલેક્ટ્રોનિક કમ્યુનિકેશન કર્યું, પણ છતાં બી passion was always real estate and wanted to see once Amitabh Bachchan. So that was the ख्वाहिश. અને એ ખ્વાહિશ સાથે almost 30 વર્ષ પહેલા મુંબઈ ગયો અને મુંબઈ જઈને મારી અત્યારે રિયલ એસ્ટેટ કંપની છે, લોટસ ડેવલપર્સ, અને વી કેટર ટુ વેસ્ટર્ન પાર્ટ ઓફ મુંબઈ. And we make generally very high-end residential and commercial projects, including Shah Rukh Khan or Amitabh Bachchan or Sanjay Leela Bhansali or whatever you name. Everybody has a house in my complexes. Mr. Bachchan and Ritik are on my board. They are directors. And I think few of I'm fortunate કે બચ્ચન સાહેબ પબ્લિક ફોરમ ઉપર એમ કહે છે કે આનંદભાઈ મારા ફેમિલી છે. તો અમદાવાદથી એક સપના લઈને જઈને ગયા હતા, ને સપનું કુદરતે આપણે જે શાહરૂખ ખાનની ફિલ્મમાં પહેલાં કહ્યું હતું ને કે જ્યારે એ એકદમ શિદ્દતથી તમે કોઈ વસ્તુને માંગો ને તો કુદરત તમને આપતી હોય છે. તો મારા કેસમાં સાચી હતું. સો ધીસ ઇઝ વોટ માય જર્ની. Wonderful. Anandji, a lot of youngsters are sitting here. Are you okay with Gujarati, right? No, I'm sorry. Hindi, English, whatever. How many people Hindi. Oh, are? I'm sorry. How many people are well versed with Hindi? Okay, so let's have conversation in Hindi. All right. So let me just sum it up for all those who could not understand. He said that he was a dreamer. He loved Amitabh Bachchan. He watched a film called Trishul.
And in the film, there was one scene wherein Amitabh Bachchan wanted to become a real estate giant, and from that he borrowed a dream. He wanted to get into real estate, and then from Ahmedabad, studying into LD engineering, he finished his studies into EC, I think, electronic communication. You said, yeah. And then he went to Mumbai to become a real estate developer, and now he has Amitabh Bachchan and Hrithik Roshan as the board of directors in his real estate company. And almost all the big names of Indian film industry, they own a house in his residential high-end luxurious scheme. So huge round of applause for this journey, very inspiring journey. I was just mentioning that there are a lot of youngsters और उनकी आंखों में कुछ सपने होंगे. आपके सपने से भी वो इंस्पायर हो सकते हैं कि ऐसे बड़े सपने भी देखे जा सकते हैं और पूरे भी हो सकते हैं. So talking about films, how did you this transition happen? How did you enter into film distribution, then producing, and then now you are actually a propellant for the film industry right now? We all know India has got only two religions. One is cricket and second is Bollywood. These are the only two religions. So मुझे पता था कि मैं शायद क्रिकेटर तो बन नहीं पाऊंगा. So at least Bollywood में तो हाथ आजमाए. And I always thought media industry is going to be huge. And I feel even as on today that media, film, television, or whatever, OTT, and the industry is still in its infancy. It's going to grow multi-fold. So it has got huge potential. Keeping that in mind, I thought that I should have that another vertical. And I had a synergy with my existing business of real estate because I operate in Andheri, Juhu, and Bandra, which is the primary residences or offices of Bollywood. So because of that, I had that collateral advantage. I started my journey long back with Sub TV Shri Adhikari Brothers, and we started producing some films, financing some films. But my banner, which is Anand Pandit Motion Pictures, was inaugurated by Mr. Bachchan in 2015. So this is actually in 7 years we have acquired, produced, distributed more than 65 films. In 7 years. In 7 years we have done 65 films. We are second largest right now in film industry. Once again, I don't know how many are interested in media and Bollywood. How many students are interested in media and Bollywood? Oh, no one. Just one person. Okay, so I'm not boring you then with all my. Nobody is from media. Okay. Anyway, then I will make it more general then, and we'll have more interactive session. So generally, if we talk about the business of films, the strike rate is generally 5%. Only 5% films are successful. When you say successful, means commercially successful. It could be good film, but commerce-wise, because I feel commerce and creativity go along with each other. It's very important to see the commerce. But only 5% films are making good business or break even. Whereas at Anand Pandit Motion Pictures, we are very, very particular about what kind of project and at what cost, because उसमें मेरा अहमदाबादी पना आ जाता है. So we are very particular about it. So our strike rate is almost 92%. So whether our films are good or bad, we make money. So that is why we could sustain. We are making majority Hindi films, but we have inroads in Gujarati films also. Last year we produced a film called Fakta Mahilao Mate. I don't know, some of you might have
बहुत देर बच्चन साहब को लेके आया था मैं उसमें टीमियों के लिए. And in fact, tomorrow also we are doing one muhurat of a big Gujarati film called Tranika. We are making number of films in Marathi also, and now we have forayed into South film. On 17th March, my first South film called Kabza is getting released. It's like a KGF kind of film. It's pan-India film. 4 original language and 1 Hindi language. We are releasing that film. So this is what our journey is. It's a very interesting journey. You've already produced Marathi films. You are entering into South industry, and it's almost a pan-India release, as you said. You have Sudeep in it, I think you have Upendra in it, and you have Shreya Saran in it. And it's called Kabza Bollywood, Underworld का Kabza. So actually आपके लिए तो बॉलीवुड का कब्जा ज्यादा अप्रोप्रिएट है because आपने इतने कम स्पैन में कितना ज्यादा अक्वायर किया है. और नॉट ओनली वेल्थ, आप जो कह रहे हैं कि फिल्म चाहे बुरी हो या अच्छी हो लेकिन वो बिजनेस करनी चाहिए, स्ट्राइक रेट ऑफ 92%. So how do you do that? I mean, how is that possible that even if a film's content is not as great but it makes money, so how do you ensure that that creativity is balanced with commerce? Let's take an example of one of the films that you think is not creatively that great, but business wise it has done very good. And what was your calculation behind it? One of the brilliant example, I will give you my film called Bazaar. Saif Ali Khan. Saif Ali Khan. Yeah. वो फिल्म किसी ने ऑलरेडी बना ली थी और डब्बे में थी. Nobody was touching that film. I watched that film with my team, and I thought that it can do wonders on box office. क्योंकि उसमें वो फ्लेवर मुझे लग रही थी, because everybody thought कि ये स्टॉक मार्केट की फिल्म है, सो बच्चे नहीं जाएंगे, बूढ़े नहीं जाएंगे, लेडीज नहीं जाएंगी, खाली जेंट्स जाएंगे. So that's how it will curtail my footstep. लेकिन we took that calculative risk, and at whatever price we bought, उससे almost 400 times we made money, and it was obviously successful. Yeah, very It ran for almost 4 to 5 weeks in Ahmedabad as well. I remember that. Yeah, very interesting. And Wall Street, Wolves of Wall Street, exactly. Flavor था उसमें. Yeah. So and it was a tight film. So it was, yes, your gut feeling. So it, no, मतलब ये था that you must have watched a lot of films during your childhood. No, or how? What is that acumen? How do you judge that? Whenever some script comes to me or some film comes to me, simple thing, I try to put myself in a viewer's shoe. कि मैं अगर व्यूअर हूँगा तो मैं 200 रुपया देके ये पीवीआर में या मल्टीप्लेक्स में जाके देखूंगा कि नहीं. Because now theaters has become like a appointment viewing. It's a different phrase, the appointment viewing. It's not regular entertainment, because everyone thinks कि मुझे सैटरडे 6 बजे फैमिली के साथ में फिल्म में जाना है, तो आज टिकट बुक करनी है, सैटरडे 5 बजे से बच्चों को इकट्ठा करना है, वाइफ को बुलाना है, सबको लेके जाना है, मेरा 5 घंटा आने जाने का, वहां पर 3 घंटा 3-4 हजार रुपया जाता है. So this whole thing, now has changed especially after the emergence of OTT. So in that case we become very very particular कि ये फिल्म है, वो देखने के लिए ऐसा कोई फैमिली जाएगा नहीं. So if I think that I will go and watch this film, वो अंदर से अगर आवाज आती है ना, then only I buy that film or I produce that film. Alright. So while you are talking about the consumption pattern of audience, after the emergence of OTT, obviously things have changed dramatically. When you say that when people go to multiplexes only by appointment now, what kind of films will never make to multiplexes anymore, and what kind of films will be required for the multiplexes to survive as far as the OTT competition is concerned? Yeah, this is a very 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 interesting question, and
everywhere in the press also, everyone is asking me this question, being a totally commercial person. Because I'm not passionate about film. I'm passionate about my real estate. But I'm here, as far as my film is concerned, I am here strictly as a businessman. So keeping that in mind, and whatever, pandemic has brought in, especially the emergence of OTT, very strong emergence of OTT, these two formats has completely changed. Theaters and viewing at home. As I explained you, theaters has become a matter of experience. People are going to theater for experience. They want to go with family or friends. They want to enjoy popcorn or samosa, having a nice time, laugh together, or enjoy the movie like Pathan. So Pathan, लोगों को अच्छा लगे नहीं लगे बात अलग है, but everybody were enjoying. Okay, so it was a matter of experience. Whereas same Pathan, when you watch on television at home on OTT, it's merely a data consumption. You are consuming the data, you are consuming the content, you are not experiencing it. Okay, so things has changed. Now some of the films you want to just consume it at home, and some of the films you want to give your 5 hours of your life and maybe 3,000 rupees of your kitty, go there and experience it. So now I feel these are two separate ways the industry is going. Sorry. One is you make films for theaters, and second, you make films for home viewing. I would say either it is OTT or whether it is channels, but it would be two separate ways. Brilliant example, even with the actresses. Thank you. My friend Manoj Bajpayee, one of a great actor. You'd love to watch him in whatever Family Man or this, that, everywhere. But इसमें कितने लोग ऐसे हैं कि मनोज की कोई फिल्म आए और फर्स्ट डे फर्स्ट शो में 300 रुपया देके देखने जाएंगे? बहुत कम लोग. रादर आज मैं पूछूंगा कि मनोज को ए रेटेड एक्टर कौन कितने गिनते हैं, तो मेरे ख्याल से almost 100% will say कि he is a A-rated actor. So now, even with the talent, not only with the films, with the talent also, things has changed. कि ये OTT के लिए है ये actors और ये theater के लिए. So things has completely changed now. And as a producer or as a director or as a actor, I will have to get skewed with that. कि मैं ये फिल्म बना रहा हूँ OTT के लिए बना रहा हूँ कि मैं थिएटर के लिए बना रहा हूँ. समझो अभी बहुत अच्छी फिल्म आई थी दिवाली के ऊपर, ऊंचाई. Brilliant, but could not do business because everybody thought that there is no experience in that. It's a beautiful film, but I will watch that on OTT. I will consume that on OTT. So that's why 6 वीक के बाद में उनका OTT पे रेटिंग बहुत अच्छा था. So this is how I think the consumer behavior has changed completely. Which means that larger than life cinema or festival cinema is probably the way ahead for the producers for big screens, and slice of life content is meant for OTT. Are you indicating that? More or less. I mean, OTT is the place where आपको मैं एक example देता हूँ कि my friend produced one film called Stree. Brilliant film. राजकुमार राव के साथ में. तो हम लोग फैमिली के साथ में जाके मल्टीप्लेक्स में देखी. मुझे बहुत मजा आई, बहुत हंसे हम लोग. It was fun, real good, hilarious movie. वो मूवी देख लिया, but my younger daughter was in LA. When she came back during the pandemic, she said कि डैड चलो आप घर पे कोई फिल्म देखते हैं.
So I said, बेटा तुमने स्त्री देखी? बोले नहीं देखी है. And I know that you were praising so much. मुझे बोला तुमने हमारे घर में थिएटर है. So me and my daughter we started watching it. 45 मिनट तक कोई लाफ्टर नहीं. और 2.5 घंटे की फिल्म देखी, उसमें 3 या 4 दफे लाफ्टर आया. That's all. So she said कि डैड आपने क्यों ऐसी फिल्म सेलेक्ट की मुझे? Then I realized the same film when I was watching in the theater with people, it was a celebration. But when same film I started watching on my personal viewing, it was like data consumption. So I was not experienced. So it's completely different. So even slice of life cinema can be experiential, provided there is a large group of people watching with you, and there, say if it's a comedy, you might not laugh when you are watching all alone by yourself or when you are watching just with your family. But when you are with a group of people, you might end up laughing because everybody else is under the impact of a collective experience. Correct. एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ कि one movie I produced called Total Dhamal. I don't know some WW. Climax में W. तो उसमें एक सीक्वेंस थी, वो हेलीकॉप्टर थी. हाँ, ब्रिलियंट सीक्वेंस. वो सीक्वेंस थिएटर में जब हम देख रहे थे तो इतना हंसे, इतना बढ़िया, और पूरी पब्लिक हंस रही थी. 2 साल के बाद में ड्यूरिंग पैंडेमिक मैंने फिर से वो घर पे लगाई हमारे थिएटर में, और वो सीक्वेंस देखी तो मुझे लगा कि कैसी इडियट जैसी है. So this is the difference. Same sequence, watching alone, I was not enjoying. So now things has changed. Theater में लोग experience के लिए जाएंगे. It has to be a festive kind of thing. Okay, one more factor that we are not considering here is the attention span of the audience. So even if we look at the audience that is sitting right now, there is a lot of divided attention that I am able to gauge. Because of the habit, they are habitually fragmented. Their attention is fragmented habitually. They are perennially fragmented as far as attention is concerned. એટલે constant આમ 24 કલાક બેધ્યાન હોય ને એ પ્રકારનું ઓડિયન્સ હવે થઈ ગયું. So now when that has happened, what are the challenges for both the makers, OTT makers and big screen makers? Yeah, it's a good question. And I will give you my take on that. मेरी एक फिल्म अभी दिवाली के पहले आई, डॉक्टर जी. I don't know शायद आप लोगों ने देखी है. So सबने मुझे बोला कि अरे बहुत, आयुष्मान ने मुझे फोन करके बोला कि ये बहुत अच्छी फिल्म मैंने देखी थी. तो हमने एक 60 लोगों का, यंगस्टर्स का रिलीज के पहले शो रखा, और मैं पीछे जाके बैठा, खाली ये देख रहा था कि कितने लोग अपने व्हाट्सएप पे बिजी है. तो उसमें देख रहा 60 में से 40 लोग व्हाट्सएप पे है. तो मैंने बोला ये फ्लॉप हो रही है पिक्चर. So unless and until you keep them engaged in the film, so it has become very challenging. आप देखना ये इसमें भी अभी रिसेंटली आई पठान में, तो पठान में आप स्टोरी को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, स्क्रीन प्ले को कर सकते हैं, शायद कहीं कहीं उसकी मेकिंग और इफेक्ट को कर सकते हैं, बट यू विल बी एंगेज इन द फिल्म. You won't see a lot of people WhatsApp each other. No. So that's now I think that is one of the measurement rather to gauge your success. So the craft is also aligned with the attention span of the audience. Absolutely. The craft has to be aligned with it. तो when अब ये सब करने जाएंगे तो फिर कला कहाँ रहेगी? तो फिर पूरा कॉमर्स हो गया ना सर. मुझे लगता है कि व्यूअर के पॉकेट में से 200 रुपए निकलना वो सबसे बड़ी कला है. उससे ज्यादा बड़ी कला हो ही नहीं सकती. आइदर आप समोसा बनाओ और समोसा 200 रुपए निकाल के समोसा दो, या फिल्म. सो आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग इज कि कला जो है ना, जो लोग पैशनेट थे, बहुत इंटरेस्टिंग बात एक दूसरी बताता हूँ कि
film industry is such a powerful industry. आज अमिताभ बच्चन ने एक स्टेटमेंट दे दिया तो पूरे उसमें एक वेव आ जाएगा, या शाहरुख खान ने दे दिया कि छोटे एक्टर ने कुछ समझो वो उसकी वाइफ का चोला पहन के घूमने लगा तो भी आ जाएगा. So it is such a powerful industry. लेकिन उसकी डेप्थ जो है फिल्म इंडस्ट्री की, it is only $500 million, which is very shallow, but still very powerful. आज फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा कोई प्रोड्यूसर नहीं है कि जो 1000 करोड़ का या 500 करोड़ का आज का चेक लिख सके. आई वुड से कि बाकी की काफी इंडस्ट्री, आपकी स्टील इंडस्ट्री हो, प्लास्टिक इंडस्ट्री हो, फर्नीचर इंडस्ट्री हो, रियल एस्टेट इंडस्ट्री, उसमें आपको 2-2, 5-5 लोग तो मिलेंगे कि जो 1000 करोड़ का चेक लिख सके आज का. ये फिल्म इंडस्ट्री इतनी पावरफुल होने के बाद में नहीं है. रीजन एक ही है, everybody starts producing and then they become passionate about it. So मेरे पास में जो भी स्टोरी आती है, जो स्टोरी अच्छी लगने लगती है मुझे, जो भी एक्टर आता है अच्छा लगने लगता है, जो भी सेटअप होता है मुझे अच्छा लगता है. So that's why if you think कि except 1 or 2 houses recently, समझो कि यशराज है या धर्मा है, इसे 2-3 प्रोडक्शन हाउस को छोड़ के आप पुराने 50 साल पहले के कोई भी प्रोडक्शन हाउस आज जिंदा नहीं है. जस्ट बिकॉज ये उनको लगता है कि हर एक फिल्म चलेगी मेरी, एंड दे गो ऑन ए इजी ट्रैक एंड दे बिकम वेरी पैशनेट अबाउट. उनको लगता है कि मैं पैशनेट हूँ. तो मुझे लगता है कि जैसे आपने पहले क्वेश्चन किया कि आप कैसे सिलेक्ट करते हो, द सिस्टम ऐसी है कि एक स्टोरी आती है, स्टोरी हमारे वहाँ अप्रूव होती है, जनरली स्टोरी अप्रूव होती है. स्टोरी के बाद में डायरेक्टर ऑन बोर्ड आता है, फिर स्टोरी राइटर एंड डायरेक्टर साथ में एक्टर को पिच करता है, एंड फिर ये एक्टर ना बोलता है तो दूसरे एक्टर 1, 2, 3 एक्टर तय होते हैं. तो 1, 2, 3 में से किसी को भी लेके प्रोड्यूसर उसको ग्रीन लाइट करता है. सो दिस इज द वे जनरली प्रोजेक्ट होते हैं, फिल्में बनती है. मेरे वहां हमने सिस्टम थोड़ी अलग की है कि हम स्टोरी आती है तो स्टोरी के ऊपर वर्क ही नहीं करते. वी डोंट वर्क ऑन स्टोरी. हम राइटर को ये बोलते हैं कि तुम एक्टर के पास में जाओ, और एक्टर अगर ओके बोलेगा, ए ग्रेड एक्टर जो सेलेबल एक्टर है वो बोलेगा, तो देन वी, बिकॉज मैं ये सोचता हूँ कि अगर मेरी फिल्म नहीं चलती है तो मुझे 2-5-10 करोड़ का नुकसान होगा, बट एक्टर की तो लाइफ नहीं चल जाएगी. सो ही इज मोर पर्टिकुलर about choosing the story. So आज बच्चन साहब अगर कोई बोलते हैं कि भाई मुझे ये स्टोरी पसंद आई है और मुझे फिल्म बनानी है, तो फिर मैं कोई उसमें कोई ज्यादा मेरा मौका नहीं होना चाहिए कि मैं नहीं ये नहीं बनानी है. So this is how we choose the films. So that is why our success ratio is much better. It's a very interesting way of functioning. But still, I have my follow-up question is that do you think that it is possible to make a Mughal-e-Azam in this era? Because that was passion, that was art, that was cinema. It was Taj Mahal. So do you Taj think Mahal एक ही बनता है. फिल्म इंडस्ट्री कोई समाज सेवा के लिए नहीं है. That industry also wants to make money out of entertainment. Entertainment is a business. So अपने वहां पहले क्या था कि अपने को ऐसा ऑलवेज ऐसा था कि एंटरटेनमेंट हैज टू बी फ्री. रामलीला होती थी, भवाई होती थी, वो फन फेयर होते थे, सब में कोई टिकट होती नहीं थी. तो उसमें से ये 300-400 रुपया तक लेके आना, इट वाज अ बिग डील. आई थिंक हमें जो कस्टमर को चाहिए वही परोसना चाहिए, एंड दैट इज व्हाट आई फील. आपको ठीक है, लाइफ में कभी ऐसा लगता है कि ये एक फिल्म, जैसे अभी मैं एक फिल्म बना रहा हूँ, उसका नाम है वीर सावरकर. रणदीप हुडा के साथ में ऑलमोस्ट 70% हो गई. सावरकर साहब के ऊपर है. सावरकर साहब की जब मैं जर्नी देख रहा था, तब मुझे लगा कि मुझे उनको न्याय दिलाना चाहिए, एंड मेरी आने वाली जनरेशन के लिए कुछ छोड़ के जाना चाहिए. तो इसमें कोई कॉमर्स नहीं है, उसमें 1 रुपये की टिकट नहीं होगी तो चले जाएंगे. सो
कोई एकाध दो फिल्म आप ऐसी बना दो कि जो आपके ख्याल के लिए है, आपकी आपके थॉट के लिए है, तो वो बात अलग है. So Veer Savarkar is for me, it's like I'm living something for my next generation. तो ये बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं आर्ट का एलिमेंट या फिर समाज को कुछ देने वाली जो बात है वो आपके जहन में भी है, आप सिर्फ कॉमर्स नहीं सोच रहे हैं, ये भी एक प्रशंसा करने लायक चीज है. तो लेकिन आपने कहा कि कहाँ से लेकर कहाँ तक आ गए, 300 रुपए की टिकट तक आ गए, और मजेदार बात तो है कि टिकट 300 की होती है और पॉपकॉर्न समोसा का 1000 हो जाता है. और अब तो लीगली भी मतलब पिछले कुछ दिनों में इसकी काफी चर्चा हो गई इस देश में. तो अब जो आप एक्सपीरियंस व्यूइंग की बात कर रहे हैं वही लेने के लिए लोग वहां पे जाते हैं. आर यू गोइंग टू एंटर इनटू ओटीटी बिजनेस फुल फ्लेजेड? ओटीटी प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं कि ओटीटी You creating your own OTT platform, or maybe you creating a plethora of content for OTT? No, we have already started a division for making OTT content. But as far as OTT platform is, it's a very deep pocket game. तो आप जितने भी अभी देखेंगे तो उसमें से 5 साल के बाद में खाली 2 या 3 लोग ही जिंदा होंगे. सो बिकॉज एक्विजिशन होगा और उसमें रेवेन्यू मॉडल ज्यादा नहीं है. सो अनलेस एंड यू आर लाइक नेटफ्लिक्स, जो आपके पास में पुराने कंटेंट इतना है जिसके ऊपर आप रन कर रहे हैं, इतने सब्सक्राइबर है, तो ठीक है. या तो आप अमेज़न है कि जिसमें you want just the eyeballs to your OTT to your shopping cart. तो उनके लिए क्या है कि रेगुलर बिजनेस में इतना प्रॉफिट है तो इसमें कितना भी लॉस होगा तो be able to offset. So keeping that in mind, they are in OTT. So OTT is a very tough business, very tough business. Okay, one more question as far as OTT content is concerned, and even theatrical releases are concerned. Since last 10 years, we have seen a shift in consumption pattern of Hindi audiences. That they are more aligned towards Korean content as well, global content. Avengers भी आ जाएगा, Spider-Man भी बहुत अच्छा बिजनेस कर लेगा, और आपका सदर्न इंडस्ट्री जो आपकी मातृभाषा नहीं है लेकिन वो डब कंटेंट है या फिर वो सबटाइटल्स के साथ है, तो वो भी आप अच्छे से कंज्यूम कर रहे हैं. तो कोरियन कंटेंट भी आ रहा है, आपका वेस्टर्न कंट्री से भी कंटेंट आ रहा है. So there is a lot of content which is going very heavy on the Hindi belt as well. So ये किस तरीके का democratization of content हो रहा है, ये सेटल डाउन कैसे होगा? What is the future that you foresee? So अपना जो कॉन्सेप्ट है वसुधैव कुटुंबकम वही इसमें चालू हो गया है. So it has become global, especially with OTT. The consumer has become younger, and since he has got access to so much content, he is ready to experiment with the content. मुझे सुबह में खाली पहले इडली और डोसा मिलता था, लेकिन now if I have got lot of other varieties, I am ready to experiment. So that is what is happening. कि मैं कोरियन भी देख रहा हूँ, मैं स्पेनिश भी देख रहा हूँ, आयरिश भी देख रहा हूँ, मैं हॉलीवुड भी देख रहा हूँ, साउथ की भी देख रहा हूँ. So that is what has happened. And उसका फायदा मानो या न मानो अपनी रीजनल, whether it is Gujarati or whether it is Marathi, whether it is Punjabi, whether it is Bhojpuri, whether it is South, उसको भी मिलता है. Because now people are ready to watch Gujarati films or Marathi films or South films. South films, when you say South film, जो पैन इंडिया का कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, so I would say South film is almost like for me हॉलीवुड फिल्म. मैं एवेंजर देखने जाता हूँ, उसमें डब वर्जन देखता हूँ कि केजीएफ का डब वर्जन देखता हूँ, मेरे लिए दोनों सेम है. सो आई एम नॉट कंपेयरिंग केजीएफ विद बॉलीवुड, आई एम कंपेयरिंग केजीएफ विद ए डिफरेंट लैंग्वेज डब इन हिंदी, whether it is a Korean film or a South film or foreign film. So this is what is happening right now, and that's why बॉलीवुड को भी ये कंपटीशन चारों ओर से कंपटीशन मिल रही है, एंड इट्स अ गुड थिंग. सो अर्लियर यू नो लास्ट करीब 6-7 साल से खाली प्रोजेक्ट्स बन रहे थे, फिल्म नहीं बन रही थी. सो हम लोग खाली प्रोजेक्ट बना रहे थे कि ये हीरो आ गया, ये हीरोइन आ गई और ये डायरेक्टर आ गया, इतने में बन गया, ओटीटी ने इतना पैसा दिया.
म्यूजिक का इतना पैसा आ गया, ओवरसीज का इतना पैसा आ गया, तो खाली बॉक्स ऑफिस है. So there was no focus on box office. There was no focus on my viewer. कि व्यूअर को पसंद आएगा कि नहीं. So now we are going back to drawing board. जो 80s में 90s में जो फिल्में आती थी वो तो कभी सोचते नहीं थे कि मुझे OTT में से कितना मिलेगा, म्यूजिक में से कितना मिलेगा, सैटेलाइट से कितना मिलेगा. So their focus was always box office. So now that is what is happening. While the focus is on the box office, how important is star power, casting, marketing, gimmicks, very interesting, controversy? very very interesting question. So the golden sutra ऐसा था मीडिया इंडस्ट्री में कि कंटेंट इज किंग. आप कहीं पे भी जाएंगे तो दिस वाज अ गोल्डन सूत्र, कंटेंट इज किंग. आज के टाइम में ये अधूरा है. खाली कंटेंट से भी नहीं चलेगा, खाली स्टार पावर से भी नहीं चलेगा, बट स्टार पावर विद कंटेंट इज किंग. तो मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं. समझो आप, मेरी अभी लास्ट फिल्म आई थी दृश्यम 2. दृश्यम 2 एकदम सिंपल, बहुत अच्छा कंटेंट था. वो कंटेंट में अजय देवगन थे. मैं ये जब भी डिबेट होती है मैं बोलता हूँ अजय देवगन को निकाल के मैं कोई छोटे एक्टर को रख देता हूँ तो क्या 250 करोड़ का बिजनेस करेगी? आप देखने भी नहीं जाएंगे. So content remains same. Actor may be even better than Ajay. मैं अच्छा से अच्छा एक्टर को लेता हूँ, but if he doesn't have star power, it will not. So now both the things is important. खाली स्टार पावर से तो हमने देख लिया. बड़े बड़े स्टार्स का नाम नहीं देना चाहूंगा ये फॉरम से, पर 6-6, 7-7 फिल्में फ्लॉप हुई है, बड़े बड़े स्टार्स, क्योंकि उन्होंने खाली यही देखा कि प्रोजेक्ट कैसे बनते हैं, नॉट द फिल्म. सो खाली स्टार भी बचा नहीं पाता है फिल्म को, और खाली कंटेंट भी नहीं बचा पाता. दो चीजें रह गई, मार्केटिंग और गिमिक्स, कंट्रोवर्सी. या इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. मार्केटिंग, जैसे फिल्म इंडस्ट्री को अगर आप डिवाइड करते हैं, कोई भी फिल्म इंडस्ट्री का बिजनेस, तो देयर इज वन एस्पेक्ट इज कॉल्ड प्री प्रोडक्शन, सेकंड एस्पेक्ट इज प्रोडक्शन, थर्ड एस्पेक्ट इज post production, and fourth aspect is marketing and release. So at my company, at Anand Pandit Motion Picture, we divide this. 50% we give importance of pre-production, 10% production, 10% post production, and 30% marketing and so-called gimmick or so-called distribution. It's or promotion. It's extremely important. लेकिन कोई भी गिमिक या तो कितना भी बजट आप मार्केटिंग में डालो, वो पिक्चर को बचा नहीं सकती. It can't save. एंड फर्स्ट डे पे आपको शायद बॉक्स ऑफिस नंबर मिल जाएगा, बट सेकंड डे इट कैन नॉट सेव. सो आपको अवेयरनेस के लिए या तो फर्स्ट डे क्लाइंट को अंदर लाने के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं, बट सेकंड डे से इट डजंट मैटर. अगर पिक्चर अच्छी होती है तो आप मार्केटिंग नहीं करोगे तो भी चलेगी, और पिक्चर बुरी होगी तो कितना भी मार्केटिंग करोगे तो चलेगी. बहुत बढ़िया. So we have this audience also, and I want the audience also to interact with you. So if we have questions, we want to take the questions, and since he has to go to an important meeting as well, so we probably keep the questions shorter, precise, and limited. Thank you. Okay. Very carried away and producing a film and taking a practical role of not entering into that. How to differentiate that? And that is the most important thing. So that हम बोलते हैं ना कि एक लक्ष्मण रेखा आपको लगानी पड़ती है. It's extremely difficult. What you are saying is absolutely right. आपको हर फिल्म अच्छी लगेगी, हर फिल्म अच्छी लगेगी, but when you start analyzing, नहीं ये देखने कौन जाएगा, you know, जैसे मैंने एक फिल्म अभी बनाई थी अजय देवगन के साथ में, बिग बुल. It was on someone's real life. I don't want to mention. But उस टाइम पे उनको लग रहा था कि even my call was कि इसमें लेडीज को मजा नहीं आएगी, क्योंकि this is about scam.
दूसरा कि 20 साल 25 साल पहले हो गया था तो आज की जनरेशन को शायद पता नहीं चले. स्टिल वी टिकट कॉल के नहीं लेते हैं और ओटीटी को बहुत अच्छी लगी थी तो देन वी गिव इट टू ओटीटी. सो आपको वो एक लाइन दूरी लगानी पड़ती है. इट्स वेरी टफ. यस. Anand, I have two questions actually. So first, you mentioned that if an actor chooses a script, then definitely it's a good story. But that can be challenged by a lot of films. In fact, Bachchan Saab only did Unchai, right? And that could not do well on the box office. And second, what you said is that content is the king, but star power is needed. But then how would you defend Kantara? So I'll take the second question. So first question. So बच्चन साहब ने सिलेक्ट की थी फिल्म, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ. मैं कुछ और बता रहा हूँ आपको. एंड द फिल्म वाज गुड. इट वाज क्रिटिकली एक्लेम्ड फिल्म. बट आज का टाइम क्या है कि यूथ नहीं था उसमें. इफ यू ट्राई टू एनालाइज द फिल्म देयर वाज नो यूथ टू दैट. एंड आज का यूथ को अनलेस एंड अनटिल यू ग्रैब हिम, यूथ को अंदर लाने के लिए, सो वही इंडस्ट्री में यही चल रहा है कि यूथ को मैं कैसे ला सकता हूं अंदर. इफ आई गेट दैट मंत्र आई एम डन. ओके. जैसे पठान में आपने देखा तो यूथ ने कैरी कर लिया पूरा का पूरा. कितना भी बॉयकॉट, ये कॉट, वो कॉट चलता रहा लेकिन कुछ नहीं, यूथ ने वो कैरी कर लिया. सो उसमें मेरे हिसाब से फिल्म वाज ब्यूटीफुल, वेरी नाइस मैसेज, गुड एक्टिंग, good direction, but there was nothing to offer to youth, so they could not relate to that. So that's one. Second, I was saying my other theory कि मैं आज दृश्यम 3 बनाता हूँ और अजय देवगन को स्क्रिप्ट भेजता हूँ. अजय देवगन को अगर स्क्रिप्ट अच्छी लगती है तो मेरा काम आधा खत्म हो गया. बिकॉज my stake is just the money. His stake is his career. Okay, so that is what the call we are taking. Second, your question about Kantara. Kantara is a Korean film for me. Okay, so even right now I am producing this Kabza, which will be released on 17th March. It's not a Bollywood film, so I am not comparing it to a Bollywood film. A KGF is not a Bollywood film. So South की film, as I explained earlier, is a for Hindi belt. It's a foreign film. उसमें स्टार पावर होगा नहीं होगा, कौन आता कीचड़ सुदीप पाएगा, ये उपेंद्र आएगा, किसी को पता नहीं होगा. इसमें वहाँ के सलमान खान ऋतिक है वो, लेकिन किसी को पता नहीं. लेकिन पता नहीं चल रहा, लेकिन मजा बहुत आ रहा है. अगर ऐसा होता है ना तो people will go in. But when it comes to Hindi, they become suited voting. नहीं, मुझे तो ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये नहीं होगा, मुझे गाना नहीं होगा, मेरा एक्टर नहीं होगा, यूथ नहीं होगा, फलाना नहीं होगा, नहीं जाओ. But when it comes to kind of, I would say, foreign language films, which include South film, then they have no issue. So this is the behavior pattern of youth. One more question. Yeah. You mentioned that it has now become a polymer industry and earlier it was a regular feature, and pricing might have something to do with it. Do you think, because I have heard a lot of people talking and debating about lowering the prices of the ticket as well as the other 1,000 rupees of the popcorn, do you think if that is made, if that is done, more people will watch it, it will have some impact? Because more people can go and watch from the cinema, and obviously mostly 70% of cinema is empty. So still people will own their tickets. So what do you think? Yeah, it's a very nice question. Theatre industry is a real estate industry. It has nothing to do with film. Okay, per square feet कितना पैसा मुझे मिल रहा है ना, that is what the business is. McDonald is a real estate business. वो 2000 फुट में कितनी रेवेन्यू बनाता है, वेदर आप चिप्स लेंगे, पॉपकॉर्न लेंगे, ये लेंगे, वो लेंगे, जो लेना है ले, लेकिन कितना बनाएंगे, so that is the business, right? So theatre business, airline business, hotel business is almost the same. Their inventory is time. ये तीनों इंडस्ट्री आप देखेंगे तो इनकी इन्वेंट्री है, टाइम है.
कि मेरी एक सीट अभी एक शो में खाली गई तो मेरा 300 गया, या तो मेरा जहाज यहाँ से बम्बई चला गया तो 3 सीट खाली रही तो मेरा 3000 रुपया चला गया, या तो मेरा होटल की नाइट एक खाली रही एक रूम की मेरी होटल की तो उसका मेरा 5000 गया. So this three has got a very unique inventory which is a time. So ये टाइम मैनेजमेंट अगर ठीक से कर सके, लेकिन इसमें दो चीज हो रही है, एक परसेप्शन मैनेजमेंट नहीं हो रहा है. थर्ड कि वर्ल्ड वाइड आप देखेंगे एएमजी या कोई भी बड़ी चेन में, सो दैट ओवरऑल रेवेन्यू जो है उसमें 65 to 70% इज अ टिकट रेवेन्यू एंड 30% इज अदर रेवेन्यू. अपने वहां स्टिल उनकी पीवीआर या जो भी आप बैलेंस शीट लेंगे तो 90% इज अ टिकट रेवेन्यू एंड ओनली 10% इज अदर रेवेन्यू, जिसमें आपका पार्किंग आ जाता है जहां पर एप्लीकेबल हो, आपका फूड आ जाता है और ऐसे सब. तो जब तक ये 10% का 80% नहीं जाएगा तब तक ये स्ट्रगल रहेगी. सो दिस इज वन. सेकंड कि अगर प्राइस नीचे ले जाएंगे तो ही आएगा ऐसा जरूरी नहीं है. आई थिंक that can be managed, जैसे एयरलाइन मैनेज करती है कि आप फर्स्ट 5 टिकट लेते हैं तो 1000 रुपये 999 में आती है, फिर 1500 में आती है. सो डायनेमिक स्ट्रक्चर अगर किया जाए प्राइसिंग का तो आई थिंक दैट कैन हेल्प. आई एम श्योर दे आर वर्किंग ऑन दैट. Last question. I have 2 questions, please bear with me. No. Okay, so the first question is, what do you think is the future of OTT and theatrical release? Are the paths diverging or converging? Will they become individual entities and cater totally different audiences, or will they cater both the type of audiences and still make money? It's a very interesting question. लेकिन I would say दोनों का existence will be with each other, as I explained earlier, in detail. Theaters will remain as a primary entertainment. Okay, a matter of experience, going out. India में अभी भी because infrastructure is not developed. So आपने कहीं सुना नहीं होगा कि आदमी फिशिंग के लिए गया, हाइकिंग के लिए गया अहमदाबाद से कहीं. So this still has not developed other recreational. So our prime recreation is still theaters. So जब तक ये रहेगा तब तक थिएटर्स को कोई तकलीफ नहीं. जब दूरदर्शन आया और उसके बाद में सैटेलाइट चैनल आए तब ह्यू एंड क्राई बहुत हो गया, थिएटर बंद हो जाएंगे क्योंकि अभी तो टीवी पे पिक्चर आएगी. उसके बाद में जब ओटीटी आया तभी भी ये क्वेश्चन आया. मेरे हिसाब से इट विल हैव इट्स ओन चार्म. इट विल, क्योंकि वेस्टर्न कंट्री में तो ओटीटी कब से आ गया है, बट स्टिल थिएटर्स आर डूइंग वेल. इफ दे मैनेज देयर कॉस्ट, आई थिंक theater business will be there. OTT is a very interesting game. They are here not to support film industry. I'm giving this a bold statement. They want to have their world of family men. They want to have their own OTT shows. They want their repeat eyeballs to come back. Because आज मैंने समझो कि एक बाजार बेचा है या बिग बुल बेचा है या टोटल धमाल उनको बेचा है, अभी टोटल धमाल 2 मैं शायद उनको नहीं बेचूं, दूसरे को बेचूंगा. Okay, but when, so it is not their property. Okay, but here if he is developing his own property called Family Man, Family Man 1, 2, 3, 4, every time repeat client comes to his OTT. So they are more interested in the shows, which is justified. They are not that much interested on films, but they know Indian client. Okay, unless and until we will have films or package with film, eyeballs will not come to. So that's why they are piggybacking right now on that. And the last question is, do you think there has been a recent OTT release which could have done way better in theaters in terms of numbers? See, always there is always a struggle. Okay, when you complete the film, कि आपको direct OTT पे जाना है कि आपको direct theater में जाना है. But now all OTT players has make it a mandate that you have to go to theater first. They want you to go to theater first and then only they will buy.
So I think this question will be solved after some time. Thank you very much. You were doing a lovely audience. And thank you so much. It was an honor learning so much from you, Anand sir. And the conclusion note should be about Tron Ekka. Because I think that was a teaser that we just teased the audience. It's not Kale Tamaki announced for the Gujarati film industry. What is it? So हमारी नई फिल्म कल लॉन्च हो रही है. कल उसके लिए ही खास आया था, स्पेशली कल है इसीलिए ये क्लब किया था आपकी रिक्वेस्ट में. So 3 Ekka, that is another film which we are उसका कल मुहूर्त है. And जो 3 छेल्लो दिवस में थे, जो 3 शूट हुए थे, वही 3 एक्टर्स इसमें है. And I need your best wishes for that. So we wish you all the best in all the pursuits जिसमें आप खुद खुश हो रहे हैं और आप लोगों में खुशियां बांट रहे हैं. उसमें आपको जितनी सक्सेस आपने सोची है उससे भी कई ज्यादा मिले, ऐसी हमारी दुआएं. Thank you. Thank you very much.